Come on, guys. Very good afternoon. Humble good afternoon to all. Please respond if you can hear me. नहीं भूल गया था क्या? जी जी हो गया मैम, मैंने उधर भी लिया था. No, no, it's okay, ma'am. It's perfectly fine. Yes, guys. हो गया मैम? रिस्पॉन्ड कर दिया बच्चे ने? अभी नहीं किया? अच्छा, कर लेंगे. आप एक बार मैसेज कर दीजिए. Stop. Okay. Hi. Can you hear me? You know, the other day I was into. I'm not into social media and all. I'm old school. तो कोई वो ऑन करके नाच रहा है, कोई ये कर रहा है, तो मुझे कह रहा है ऐसे करो वैसे करो. मैं कहीं काम कर, मैं काम कर चल. I'm not into posing and stuff. I get very conscious when the camera gets on. Apart from the formal conversation I'll have with you. So I'm a very kind of a person who sits there. मतलब full वहाँ शैतानी करूँगा. But the point is I'm not a person who will stand here and talk to people. And I've never been like that. I've ever been behind this. I'm a very shy person. You see, I will not talk to, like, मैं पीछे की गली से जाता हूँ कि किसी स्टूडेंट दिख जाता है तो मेरे को बड़ी शर्म आती है. उधर से आप मिल गए ना आप लोग. I don't want people to recognize me. क्या करना है? पैसे मिलने चाहिए. That's all matters. You make people happy through your teaching. That's all matters. That's what gives me happiness. If you understand the thing, it's help you. It is helping me. पैसा तो मुझे सरकारी नौकरी में ज़्यादा मिल रहा था. But the point is that doesn't give you, the kind of. मैं फौज में गया था कि मुझे देशभक्ति and all. But वहाँ तो कुछ और ही चल रहा है. वहाँ देश की भक्ति नहीं हो रही, वहाँ ऑफिसरों की भक्ति हो रही है. But anyway, that's a different issue. When we'll be dealing with the mains, internal security, then I'll be talking about my experience in CAPF. The one day I was just standing, बैठा हुआ था मैं, and I was like, मतलब बंकर में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर ना सामने मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर ऐसे rodents आते हैं और तो बैठा हुआ था, तो मैं उस टाइम ट्रेनिंग था नया, तो उधर से इतना बड़ा सांप निकल गया सर से आया और he just went into some hole. Just सांप लोटना कहते हैं शरीर में, तो वैसा हो गया. I was just standing, मतलब I couldn't do anything. I'm very scared of इतना बड़ा धामिन सांप बोलते हैं उसको. बहुत बड़ा होता है, but it doesn't bite. It's not venomous. But that day तो मेरे तो हालत जो खराब हुई. Because I was in Jharkhand, so every now and then you have snakes. घर के बाहर snake, उधर snake. And there was a guy called Sanjay. वो ना snake catcher था. उसको बड़ा एडवेंचर था. जैसे लड़की देखते लड़की नहीं भागते, सुंदर लड़की देखते वैसे जैसे बोलो संजय. And I still have his number on my phone. Sanjay Snake. He comes over and traps him and पता नहीं कहाँ लेके जाता था. उसको शायद पैसे मिलते थे उसके. Or maybe he was a tribal guy, so he was into. There are a lot of snakes in Jharkhand actually. But that was something which was not bearable. Apart from I'm not scared of things like bhoot bhat and all. I'm not scared of that because our duties are like that only. ना रात को बैठे हैं. I was in this NTPC का plant. That was Russian made plant. उस time पे हमारा Russian के साथ collaboration था ना. It was an NTPC plant. It was a thermal plant. Since I was in CISF, so there was this big dam and big building, older building, and we used to take care of that building so that Naxals don't come and stuff. So I used to stand here and somebody's standing like 100 yards away from me, and that's how you train and stuff. So, okay, coming back to the topic, guys, today I'll be starting with the Socio-Religious Reform Movement. Acts were left. No, I'm just coming to that. We just ended up at the Acts of 1858. After that, what I was supposed to do was I was doing permanent settlement and some the economic reforms taken up by the Britishers. So this is one part of it. This today we'll be doing. Yeah. So we have done the coming of the Europeans in India. Then we did a bit of factual thing about what we did. The Acts, which is very important. We did two important wars and a treaty called Treaty of Allahabad. What was Treaty of Allahabad? Treaty of Allahabad क्या था? अच्छा, what was the Battle of Buxar? It was in Bengal. And Shah Alam and so they got defeated. And they got the rights of Odisha and UP. And they took judicial and police power. Where they are not responsible for that.
Then the king is responsible. They are not responsible, but the king is responsible for it. what all acts did we do? 1773, 1784. 1830 like 20 years extension of that. Mm-hmm. And then 1833 that Guys, what was common among these acts and what was the difference between these acts? Just in quickly, what was the most important thing that happened in 1773? What was the background behind passing of these acts? You want to control each and the company's finances, administration. And actually, it is a time where more corruption is happening. Instead of this salary, they are putting more. True. Robert, who is 34 years old, is more richer than everyone in Europe that time. So that because of that, they thought that there should be a legitimate scrutiny over the functions of PCI. So we implemented this act one by implemented by appointing board of directors, code of direction, board of directors, board of control, and judicial system government and this act. They have made him as a commander in chief, and they identified the power of Madras and Bombay provinces, and they have made the power of Governor General came into being. What happened in 1813? What was happening in Europe this time? Napoleon was coming up. This time onwards, we see French Revolution, American War of Independence was taking place, 1776, 1770, 1789. Okay, so since 1776, we had American War of Independence, AWOI, and we had French Revolution, which kind of changed the perspective of European polity, which is having great impact on the way we look at this Act, 1813 Act. 1 lakh rupees was given to educate natives. Indian trade was open. The monopoly was extended for 20 years. And subsequently in 1833, we see Governor General of India post came up. Okay, we see Thanas, SPs, and whatnot. Yes, civil services. In 1853, we see the exam of civil services being conducted. Indians were also inducted in these things. And they made local representation in those things. Guys, please go through spectrum. Whatever is might not be left, but the point is whatever is left, because these points are very important. Do a comparative study. See, compare 1773 with 1813 or 1784 with 1813. I've given you the background. Kya ho raha tha actual mein? What was happening around? If you don't know the story, you don't understand. You don't link it with your head. The point generally what happens is बच्चे क्या करते हैं कि रटने लग जाते हैं कि अच्छा हाँ ये हुआ था अरे उसके पीछे की स्टोरी तो समझो. कॉन्टिनेंटल सिस्टम इसी टाइम पे क्यों आया था? क्योंकि फ्रांस में वॉर चल रहा था. फ्रांस में दिस नेपोलियन वाज कमिंग अप एंड ही वाज सेइंग दैट आई विल डिस्ट्रॉय इंग्लैंड. अब इंग्लैंड के पास क्या ऑप्शन है कि वो आउटसाइड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करे, अपनी कॉलोनीज बसाए, पैसा इकट्ठा करे. उसको बचना है, उसको मारना है. And what was England doing? England was also getting money from raw material from India and sending it to Europe also. So when we have France, Napoleon in Europe, we do see that the demand for British goods is declining. So that, and भाई कोई बड़ा राजा थोड़ी कोशिश करेगा, वो करेगा कि हमारे वहाँ दूसरे का माल है. He will expand himself. He will try to expand himself. So that was the continental system. Then we had social reform movement along with this 1820s, 30s. Mind you, this is the time period where we see Raja Ram Mohan Roy was very active. In that context, Bentinck was also inclined towards Indian reformation, though he was a British person. You understand what I'm trying to say? So, education, for the very first time, money was given to Indian education. When I'll be discussing with the education system of India how things happened, then I'll be discussing with more acts passed in that point of time. Then we also saw Macaulay Commission, 1830s. So, simultaneously, we had Fort William College established in Bengal. Simultaneously, we had a lot of acts being passed. Simultaneously, we saw a lot of wars being taking place in Europe as well as in India. ठीक है? This is just अभी तुम लोग जब स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ना, तो तब तुम लोग को थोड़ा रियलाइज होगा, हाँ इसने ये बोला था ऐसा. Now you just have to connect the dots. ठीक है? One class, in next 2 classes you'll be having a bigger idea about what is happening. ठीक है ना? Any doubt अभी तक? कोई चीज कनेक्ट नहीं हो रही तो पूछ लो भाई, फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी. जैसे year. What UPSC will do is UPSC will give you the year, then they'll ask you the ins and outs of it. See, the very important, very basic question. The time period is this.
ठीक है, lastly happened, you remember this? Buxar happened because first they took Bengal, then they came further up. ये बंगाल है, ये अवध, अवध मीन्स यूपी, पार्ट ऑफ यूपी, दिस इज बंगाल. बंगाल कब लिया? 57 में. फिर कहां तक आ गए? अवध तक आ गए. अब इधर तक आ गए हैं, देन यू हैड 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. क्या था? वेयर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी टेकिंग मोर रेवेन्यू instead of Nawab collecting revenue. Now the East India Company will be the whole and soul of collecting revenue, who was earlier a trading company. Now what is the difference between these like 7 years? 7 years there was dual system. What was dual system? The East India Company will be having all the revenue collecting powers, but the Nawab of Bengal will be just a puppet. Okay? So ये 7 साल का 1773 we had actually the governance coming up. 1773 we saw actually the British Crown started governing its colony, if I may use the term, because India was a colony of whom? British East India Company. You understand? So they made then further changes. भाई इसमें कुछ खराबी आ गई, then they had 1784. इसमें कुछ खराबी आ गई, then they had 1793 भी था, then they had 1813. So that's how they changed gradually. You'll read it twice, thrice, you'll be remembering that. ठीक है? Okay, so this is you remember what picture? This is Mangal Pandey or this is Lagan? This is Lagan. हाँ, you've seen Lagan? RRR की बात भी करेंगे. So here let me just introduce a new topic called the land reform movement or land revenue system of British. What do you think about the permanent settlement? The land where they are responsible for collecting tax and paying their where this You see, the very important, the basic concept of this act is, you see, whenever an administration or new company or a new thing comes, what are they concerned about? If a foreign company is coming to India, a foreign Raj is coming to India, what are they coming for? Money. They want money which is maximized. Maximum revenue, regular revenue, okay, and third is what else? क्या हुआ? Along with that, we want regular revenues. Yes, and apart from that, we want coercive means to coercion, along with revenue collection. We'll understand this point a little later. First, the main point is, I'll make you write it. Please first try to understand. Sthai Bandobast, that is called in 17. What is the time period I'm talking about? Before that, we had which act? So along with the acts which are political in nature, they are also passing settlement acts which are revenue. This is for revenue settlement. भाई खुद को पॉलिटिकली पावर तो बना लिया, लेकिन खुद की रेवेन्यू सिस्टम भी बनाना चाह रहे हैं. ओके, सो इट वाज अ परमानेंट टैक्स व्हिच वुड सेव देम फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स. भाई लगान तब मिलेगा जब irrespective of any drought. In 1770s Bengal faced a very important drought, very prominent drought. ऐसा इससे अंग्रेजों के रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. That's why they had this permanent settlement. More money should come to British, which is the obvious reason. Concept of private property is very important, and concept of private property comes from Europe. Europe meant that there was a movement called enclosure movement. भाई क्या होता है, अगर मैं suppose I give like
each property to you guys. That's what the concept they wanted. I give a certain piece of land to see her or you. So what you will do is you will maximize the production. Since I'm giving you the land, you will be tilling it, you will be growing, you will be maximizing, and after that you will be giving me certain amount of money share. What will happen? First thing, that will increase the productivity. At the same time, it will give me regular revenue. That's the whole concept permanent settlement is all about. First thing I said was permanent tax. Second thing I said was more money to me or to East India Company. Or third thing, there was a lot of corruption in the revenue collection. भाई 1765 में क्या हुआ था? दीवानी राइट्स मिल गए थे, तो जिसकी जो मर्जी वो ले रहा था, कोई असेसमेंट नहीं है, अपनी मर्जी से ले रहे। जब पहले डिजाइनेशन नहीं हुआ था, कोई भी कितने पैसे लेता था टैक्स कलेक्टर्स। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो देयर वाज अ नीड टू हैव मोर रेवेन्यू। क्या हुआ? नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसको इतनी सुस्ती क्यों आ रही है? तो उससे पहले क्लास था? ओह, which class did you have? Oh, CSAT. It's very important too, na? CSAT is also very important. For how long did you take class? 2.5 hours. चलो, today I'll take 2.5 hours, but आज थोड़ा जल्दी लिखेंगे, ठीक है? Facts are very important for today. So zamindars became the backbone of the British during revolt of 1857. Zamindars indeed were very important. See, होता क्या है कि भाई चोर चोर मौसरे भाई। अब हिंदुस्तान के लोग तो उनको चाहिए ही थे ना कुछ करने के लिए। उन्होंने क्या किया कि यहाँ के राजाओं को पकड़ लिया। अब क्या होता है कि सपोज करो मेरे कोई दोस्त है कहीं पे, इफ आई एम गोइंग देयर, सो ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ मी कि भाई वहां घुमाना है, यहाँ घुमाना है, ये करना है, वो करना है। अब मैं वहां जाके तो नहीं कर सकता ना, गुंडागिरी नहीं कर सकता। सपोज आई हैव अ फ्रेंड हु इज इन लखनऊ, ही इज द वन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ मी। सो द सेम वे इंग्लिश वर वेरी फार, सो द पीपल दे हैड इन कॉन्टैक्ट विद फ्रॉम 16th century वर द लोकल पीपल आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो दीस लोकल पीपल वर द लोकल zamindars who were with the land all the time. That's why zamindars became a very important role in times to come. I'll give you example. In Bengal, still zamindars were important. In Awadh, zamindars were important. South India, Deccan, zamindars were important. तभी गांधी ने क्या किया था? पहले local leaders के साथ शुरू करो. That's why nowadays BJP has a very strong cadre system, roots. Local leaders को पकड़ो, उनको पैसा दो, बूथ पे जाके प्रचार करो, ताकि बूथ पे तो वोट बिकते हैं असली में। Go to the very basics if you want to extract anything. अभी क्या कर रहे हैं वो बाइजूस वाले? क्या कर रहे थे? घर घर जाके हमारा प्लान लो, ये करो, वो करो, नहीं कर रहे थे। They wanted to go to your house. ये अच्छा आपकी बहन क्या कर रही है? अच्छा 12th कर लिया उसने? Okay, so उसको क्या मतलब? What is the point? To maximize, and that was the ultimate cause of decline of बाइजूस। भाई किसी भी चीज को भाई मैं एक दिन आपको 2.5 घंटे बैठा लूंगा, 2 घंटे बैठा लूंगा, किसी ने आप बोलोगे अब नहीं हो पाएगा। We have a saturation point, and that was the ultimate reason why Indians revolted, tribals revolted, peasants revolted, intellectuals revolted, laborers revolted. आप इसको नहीं समझ पाओगे तो आप रेवोल्यूशन को नहीं समझ पाओगे, ठीक है? समझ गए? लिखे हुए थोड़ा सा। अब इसमें भी इन्होंने 2-3 कैवेट किए कि भाई सनसेट क्लॉज है, अगर रात तक हमारे पास पैसा नहीं आया तो तुम्हारा लैंड किसी और को दे दिया जाएगा। से ही इज अ जमींदार एंड आई एम द ब्रिटिश, सो आई विल बी टेलिंग हिम कि यू विल बी गिविंग मी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टिल 30th sunset. If you don't give me that much money, the land will be given to somebody else. Till now it's yours. What will happen? You will be extracting more revenues from these garib mazdoors. Understand? And I'll be extracting from you. Ultimate winner is East India Company. You are just a puppet. You understand? Okay. That's the sunset clause. Sunset clause का क्या मतलब है? सनसेट तक माल आ जाना चाहिए, ठीक है? So guys, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, introduce. Where was it introduced? Here. And who introduced it? Permanent settlement? Cornwallis. PC प्रियंका चोपड़ा से याद रखना। कब हुआ था? 1790, ठीक है? लिख लो। Planned by whom? John Shore. UPSC ने इसका क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। The actual mind was his. This feature is very important. This is the introduction. This feature is very important. Zamindars were now became the owners of the land. नहीं लिख लो इसको। कर रहे हैं, वो भी करूंगा, अभी बहुत काम है आज बहुत लिखना है तुमने। सोशल रिलीजियस
इट्स ओके ना? ठीक है भाई, मुझे जल्दी कंप्लीट करवाना है। ठीक है, चलो मैं डिक्टेट भी करवा देता हूँ। इसको बड़ा कर दूं? ठीक है, द अल्टीमेट थिंग इज यू शुड नो इट, डजंट मैटर। ठीक है, लिखो लिखो, इसको लिखो। दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज द इंट्रोडक्शन, दिस इज पॉइंट नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्या बोल रहा हूं मैं? क्यों लाया गया था परमानेंट से? बस बस बस, sorry, to earn more revenues. And what was the sunset law? पैसा आना चाहिए। लैंड वॉज ट्रांसफरेबल एंड हेरिडिटरी फॉर जमींदार। ठीक है, हाँ ये लिखा हुआ है, ओनरशिप वॉज हेरिडिटरी अंटिल दे पेड द टैक्स ऑन टाइम। इन केस ऑफ फेलियर द लैंड वुड बी ऑक्शन्ड एंड मेड ट्रांसफरेबल। व्हाट वाज द रेट? 10th 11th, इतना ही लिखना बस, 10th 11th। These 3 points are very important. Quickly. Clear? क्या हुआ? डन? तो बताओ ना फिर। See, ये please remember this. Why was this needed? Because political allies they wanted to forgo, भाई किसी और को पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा, and to raise agricultural productivity. If I give land to him, the concept of private property. These 2 lines are only important for financial stability. 1, 2, 3. That's what I was talking about. Only these 3 are important. You want to elaborate, then you can. Otherwise, I think this will trigger an idea in your head. For prelims, it's more than enough. What was the impact it was having? भी क्या हो रहा है कि भाई जमींदार तो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो खेती करेंगे नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। That is the thing. हुआ नहीं ना फिर. That was the reason. That was the impact it was having. See, there are 2 things. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया फंड बनाया, 1000 करोड़ का। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में मान लिया कितने डिस्ट्रिक्ट है? 600, 650। कितना बटा? 1.2 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग होते हैं? 5 लाख। और कम से कम 100 लोगों को तो चाहिए होगा स्टार्टअप फंड। सबको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। दैट्स द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। द पॉइंट इज, राजीव गांधी ने यही कहा था ना, हमने 100 रुपए बेचते हैं तो 70-80 रुपीस तो खा जाता है। That's the whole point I'm trying to make. These people, on top of that, after that, they introduced another system called Raiyatwari system. So that was the problem with this was the land was transferable. Nobody would take care of the land. Why would they? But in England, that was happening. In England, out of this enclosure movement, sure was मतलब बड़े-बड़े लोग थे। 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है एसी रूम्स में तैयारी करने वाले बच्चे, एक होता है तुम्हारे जैसा हाइब्रिड बच्चे, एक होता है जो बहुत गरीब बच्चे होते हैं, जैसे वो पिक्चर में दिखाया था,
खेतों में वो क्या कर रहा था, वो कौन सी पिक्चर है वो? तो हाँ, मैंने देखी नहीं है, बट मैंने सुना है उसमें एक सीन है जो वो काम कर रहा होता है तो बहुत आवाज आती है। ऐसे लोग 1% होते हैं, उनमें से मैं एक को जानता हूँ जो सिलेक्ट भी हुआ, अशोक कुमार उसका नाम है, ही वाज लाइक वेरी ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम हिम आई हैव नॉट सीन अ पर्सन लाइक दैट, इट्स जस्ट अ मिथ। जो भी यहाँ हो फैमिली से अच्छे हो, लुक एट हिज हेयर, ये गरीब लगता है कहीं से? कम ऑन, यू सी, नोबडी कैन पे 1.5 लाख इफ इज वेरी पोर। 1.5 लाख कभी कमाया 100 रुपए तुम लोगों ने? कोशिश करो, इट्स वेरी हार्ड टू अर्न मनी एंड इट्स वेरी इजी टू स्पेंड योर फादर्स मदर्स मनी। मुझे कोई बोल रहा था कि अरे यार जब मैं कॉलेज में था तो करके देख लो, अभी माँ बाप के पे ऐश कर लो, खुद के तो फिर सेविंग करोगे। आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई एम नॉट इनटू, आई एम आल्सो फ्रॉम अ गुड फैमिली एंड स्टफ, बट द पॉइंट इज जब खुद पे बनती है तब तो होता है। तो इंडिया में नहीं हुआ वैसा। सी, सबसे ज्यादा बैंड किसकी बज रही है? रैयत की, पेजेंट की। उसको तो भाई फ्लॉगिंग हो रही है, कुटाई हो रही है, तभी तो इतने रिवोल्ट्स हो रहे हैं 1790s। एंड माइंड यू, अराउंड दिस टाइम ऑनवर्ड्स वी सी रिवोल्ट्स, सन्यासी रिवोल्ट। भाई इतना लैंड कहां से आएगा? लैंड तो कटेगा ना। अब आज के दिन इतने पेड़ काट रहे हो, 200 ईयर्स बैक कितने फॉरेस्ट होंगे, वो सब काटे होंगे एक्सट्रैक्शन के लिए। एक्सट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं। दैट्स द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। ठीक है, यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? impacts, that's why ये थोड़ा आगे पहुंच गई उसमें। So impact was, even if the crop failed, the person had to be, the revenue had to be paid regularly। कौन है? अरे इसके हाथ में है मंजुलिका। अच्छा, मुझे लगा मंजुलिका तो नहीं आ गई। So you understand what I'm trying to say? My brother is of your age, so my sister had bigger hair। तो वो छोटा था जब 1-2 में पढ़ते थे, तो तब वो ये वाली मूवी आई थी, तो वो बहुत मारता था। होता है ना, छोटे बच्चे अपनी बहनों को मारने की कोशिश करते हैं, तो वो बाल आगे करती थी, वो भाग जाते थे। बच्चे डरते हैं ना, छोटे लड़के डरते हैं। So you understand ना? Okay, guys, please understand and keywords लिखो अभी, ठीक है? Impacts on present. This is very important. Please note this down. Then I'll make you understand this. This is the first part. This is second part. This is third part. Please write and just keep a space. तो मैं paraphrase कर देता हूँ उसको. There's a term called sub-infeudation. मैंने तुम्हें एक टर्म बताया था फ्यूडलिज्म का। क्या था फ्यूडलिज्म? मतलब ये बड़ा आदमी है, इसके नीचे छोटे छोटे राजा हैं, तो वही करते थे एब्सेंटली लैंड। मतलब मैंने जमीन बेची, आपको, आप बड़े जमींदार हो, आपने 10 लोगों को और बेच दी, इनकी कुटाई करो, इनसे मुझे पैसा चाहिए भाई, मुझे अंग्रेज को देना है, अदरवाइज माय लैंड विल बी ट्रांसफर्ड। यस, दे वाज कॉल्ड अ सब इन्फ्यूडेशन। लैंड ट्रांसफर टू स्मॉलर मैग्नेट्स, ऐसे लिख दो, लैंड वाज ट्रांसफर्ड टू स्मॉलर जमींदार्स। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना गाइस? इट शुड मेक सेंस इवन टुडे एंड आफ्टर 30-40 डेज। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि गई फिर कथा मुझे फोन कर रहे हो कि सर ऐसे। यस यस, लैंड वाज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफरेबल, एंड इट वाज ट्रांसफर्ड इंडीड। तुमने एक बात सुनी कि गांव में हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारे गांव में भी जमीनें होंगी, तुम क्या करते हो, किसी को टिल करने के लिए देते हो कि भाई तुम कमाओ, हमको इतना दे देना, बट यू डोंट मेक रिटन अग्रीमेंट्स। नाउ यू डू, बट 50-40 years back, 200 years back, this was also asked. So the earlier system was introduced in Bengal. When was it introduced? Bengal, Bihar, the whole this area. ठीक है, पहले तो यहां पर, फिर रैयतवारी, this is permanent settlement, this is रैयतवारी settlement, parts of this area. रैयत means peasant, as she was saying कि भाई बीच में तो एक्सट्रैक्ट तो करेगा नहीं, वो दोबारा इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, so they what they did was they tried to change. Yes, and on top of that, just to add to what I said, कि still we had Supreme Court coming in 17
73, 74. सो अब भाई किसी की लैंड से कुटाई करके उससे ज्यादा लैंड ले लिया तो वो तो जाएगा किसके पास? कोर्ट के पास. कोर्ट की लैंग्वेज उसको आती नहीं तो वो फंस गया. चक्की पीसिंग एंड पीसिंग पूरा he's that vicious circle. That's why we had so much of tribal and peasant wars starting from then. Because अभी भी क्या है? Constitution for the lawyers and by the lawyers means the language is so difficult, so jargonized that the common person cannot understand. कहावत नहीं है white coat वाले और black coat वाले से बच के रहते हैं and all. So that's the legacy Britishers has given us. Okay, and laws indeed were favorable to zamindars. भाई मैं किसी को कहूंगा कि यार ये लैंड तो मैंने इसको दे दिया, जिसके पास डॉक्यूमेंट है, जिसके पास कोर्ट में लड़ने की, अब कोई रिक्शा वाला थोड़ी लड़ेगा कोर्ट में. 350 रुपए तो पेशी के जाते हैं कम से कम. It goes up to 3 lakhs. And who can hire a very good lawyer? A person who is capable of paying high fees. So Rayyatwari, then we had Rayyatwari system in where? Western part of India and parts of South India, where the revenue was directly collected by the Rayyat or the peasant, and the intermediary, who was the intermediary? Zamindars, was removed. The first part is very important. इसको पूरा लिख लो. It was not permanent. It was periodically revised. It was not even written. ये दूसरा पॉइंट है. And Rayyat was recognized as the owner of the land. It had the same impacts. Impacts को मत लिखना, similar है सबके impacts. ठीक है, just write these 3 points to save the time. Then we'll move on to the Mahalwari. What was the difference between Rayyatwari and permanent settlement, guys? First thing, where was permanent settlement introduced, and where was this introduced? और Bombay. ठीक है, time period क्या है? किसने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट? और इसने? ठीक है, मनरो. और व्हाट इज द डिफरेंस? इंपैक्ट बहुत जरूरी है, दोनों का इंपैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर था. यू अंडरस्टैंड? द डिफरेंस वाज it was in Bengal, it was collected from the zamindars. Here it was collected from the rayyats or the peasants. That's why we had so much of peasant revolts here. ठीक है, ये इसका इंपैक्ट है गाइस. क्विकली देन वील मूव ऑन टू द महलवारी. महलवारी पंजाब में हुआ था और सेंट्रल इंडिया में हुआ था. अब उन्होंने क्या सोचा कि नाउ सी हमने दोनों कर लिए. लंबी लड़की भी कोशिश कर ली पटाने की, छोटी लड़की भी पटाने की कोशिश कर ली, लेकिन दोनों नहीं पटी. तो एक हाइब्रिड लड़की कोशिश की थी. अच्छा, ऐसी भी चलेगी वैसी भी चलेगी. क्यों भाई राली हंस के तुम दोनों? मैं क्या तो कह भी नहीं सकता, मेरी तो शादी हो गई. तो अब मैं आई एम नॉट इनटू दैट कंडीशन, बट यस आई हैव बीन टू योर कंडीशन. मैं समझ सकता हूँ. in an age, girls are an issue. एक एज में होता है कि लड़की लड़कियां लड़कियां, लड़कियां कहती लड़के लड़के लड़के, etc. Then you realize कि यार it really doesn't matter. What matters is peace of mind. And I still remember I used to run after those stupid बच्ची लड़कियां, and I used to nibby girls. Lot of them were like so dumb. इससे क्या बात करता अगर मेरी लाइफ में भी होती तो? What will you talk about? I mean, it's just that it's not about क्या करें, तारीफ करने कुछ होना भी तो चाहिए उसमें. तो even but yeah, and I'm not talking about educated girl. Even I've seen guys also, even if they're intelligent, they're dumb. There's a difference. Intelligent लड़के भी dumb होते हैं. एक there was a friend of mine, he's like very intelligent, very intelligent means, लेकिन they're like bookworms. They don't know कि बाहर क्या चल रहा है, मूवी कौन सी लगी है, कौन सा सीरियल चल रहा है, गाने नहीं सुनते लोग. जी के रहे हो तुम, मर जाओ तुम. I mean, if you are not living that, why are you living? चलो हमें खेलना पसंद नहीं, कोई बात नहीं. मेरी साली है, मतलब my this thing sister in law, she's from IIT कानपुर. She's like
ऐसे बोलती हो। मैंने कहा शगुन कुछ खाएगी? घूमने चले? हाँ ना, ऐसे में जवाब देती है। वेरी प्रिटी शी इज वेरी प्रिटी। मैं तेरे साथ तो जिस तेरी शक्ल देख के तेरी शादी करेगा पता नहीं उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दैट्स व्हाट सेम आई सेड टू माय सिस्टर। इसका बॉयफ्रेंड होगा फिर? कुछ भी हो सकता है भाई। अरे हो सकता है भाई, आजकल तो सब कुछ है। मैं ओनली तो कुछ बताओ, तुम्हारी दोस्तें हैं तो उसको कुछ कराओ, सोचा रहेगा स्मार्ट लड़का है, हैदराबाद का है, बिरयानी खिलाएगा लड़की को डेट पे। क्यों भाई? क्या बोल रहे? बताओ ऐसा डेडिकेटेड लड़का कहाँ मिलेगा? बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट व्हेन वी यूज्ड टू डेट। उस टाइम पे ब्रेकिंग डाउन मूवी लगी, तुम्हें याद है? तुम लोग तो बहुत छोटे रहोगे। 2013 में तुम लोग कितने साल के थे? ब्रेकिंग डाउन अबे उसकी नहीं थी वो जो दैट अबे वो जो he's like 100 years and he's vampire. Twilight. The second part of Twilight was breaking down. I was in college then. मुझे एक लड़की लगी गई रात को, मैं बहुत खुश हो गया, मजा आ गया। तो when people say ना कि then she took me to ghost protocol 2012. I mean it's just a misnorm कि लड़कियों पे खर्चा करो and all. I to never. Even my wife shops for me. So it's just that I was very lucky. Maybe मैं दुनिया के दूसरे कोने में रहता हूँ. And I've been to a lot of girls, a lot of people, good girls, not like छपरी girls. I was very lucky. अभी मेरी भांजी हुई है कल, so अभी तुम लोग को मिठाई की दुकान है आसपास की, मैडम लोग को भी खिलानी। ग्रोवर बहुत कौन जाएगा लेकिन? अभी चलना 1 घंटे बाद, ठीक है? अच्छा तेरे अप्रोच में, बट शी इज ओल्डर देन यू, शी इज 27। कोई चलेगी, ठीक है। मैं बोलूंगा लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। जो स्टार्ट करते भाई, हमारा तो बहुत सिलेबस बचा हुआ है। उसके लिए मैं तुम्हें अलग से क्लास दूंगा किस दिन, पेपर दे लो। हाँ है स्टॉकर है यार ये तो। ओके गाइस, महलवारी। So now we have another hybrid system in northwest part of India, which is अब रेवेन्यू किसे कलेक्ट करना है? पूरे गांव से, बसंती के पूरे गांव से करना है। In the sense that, and who was the this thing? Walt Mackenzie in 1819. From where? Punjab. Please write the whole line, then I'll make you understand. 3 systems: permanent settlement, रैयतवारी, then महलवारी. हो गया? So see, this was a hybrid movement or hybrid revenue system where we had a taluk or a village. They took the assessment of that village. उससे क्या होता है? It becomes easier. Why was it introduced in Punjab only? Because land holdings बड़ी हैं पंजाब में। महल लैंड, एक लैंड बड़े हैं, अनलाइक इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब महल किसे कहते हैं? महल मतलब बड़ा एरिया, ठीक है? 100 गज का, 200 गज का, या एक पूरे विलेज का, ठीक है? दैट वाज द थिंग। द बेसिक्स आर सिमिलर हियर आल्सो, ठीक है? ओके, सो व्हाट वाज द इंपैक्ट इट वाज हैविंग? जैसे अभी क्या होता है, अभी हमारे गांव में कैसे होता है? मान लिया अभी गांव कास्ट के हिसाब से होते हैं। मान लिया संधूस का गांव, सो दिस इज अ संधू गांव का गांव, ठीक है? या ब्रार, दिस इज ब्रार्स गांव। सो इस गांव में कोई पंच होगा, सरपंच होगा। सरपंच से बोलेंगे भाई सबका असेसमेंट कर, पट्टा उनके नाम से होगा, तेरे से लेंगे। संधूस से, संधूस के गांव में सारे ऑलमोस्ट संधू होते हैं, उसको पता है। असकास्ट सरनेम्स और सिंह, पूरे सिंह होंगे ऑलमोस्ट 70-80%। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर कवर्ड एंड मैक्सिमम रेवेन्यू हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। इससे क्या हुआ? गांव का एक बंदे को पावर मिल गई
और रेवेन्यू भी एक्सट्रैक्ट हो गया. यू अंडरस्टैंड? सो देयर इज अ डिफरेंस. एक में रैयतवारी में इसमें कई लोग होंगे, उनसे एक्सट्रैक्ट होगा. अब कई लोग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना यार, आज के दिन भी पॉसिबल नहीं है. So that's why it gradually evolved over a period of time. The basic thing is very similar. Permanent settlement with zamindars, rayyatwari with peasants, and mahalwari with villages or mahals. The problem is same: over-assessment, court kacheri bazi, exploitation, maximization. नहीं दोगे तो कुटाई होगी. Or yes, and zamindars are always powerful, have always been powerful. You go historically. ठीक है? So this is part of it. The किसमें? ठीक है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे बढ़े. इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, बट यू मस्ट आल्सो नो द स्टोरी ना. ठीक है? Here another topic I want to take first social religious reform movement before, but the point is here it's very important that I should start it at the very right time. How do you look at social reform movement and how do you see women's movement? What is social and religious movement? Social भी है, क्या है भाई? सोशल फॉर्म में क्या क्या आएगा? Participation of men, then individual rights to don't all और religious? Reform movements? ठीक, subsects of reforms. So that's how we call it social religious reform movement to begin with. The very important person is Raja Rammohn Roy, who stayed till like 1833 में he died ना? He died in 1833. So 1833 तक he was very active. अब I'll give you a very brief story about the social religious reform movement. भाई क्या होता है, हिंदुस्तान में अंग्रेज आते हैं, they come to Hindustan and they call India as a land of snake charmers, where they question, and mind you, we are sitting at 1820s, 1810s. So this time period onwards, we see a lot of conservative elements of British thinking that India is barbaric, uncivilized. So and a lot of issues were very uncivilized, like sati. It was very barbaric कि भाई अपनी औरत को ही जला दो. Can you think about this now? अभी बात करने में बड़ा अजीब लग रहा है, समझ रहे हो? Caste system. Even during partition, Hindus and Muslims used to have different water. पानी पीने के लिए पियाऊ. You ask your grandfathers कि उनके पीने के पानी अलग होते थे, पंजाब वालों को पता होगा. Yeah, I understand. Like a lot of people, the amount of violence that happened in 1947. I'll be dealing with partition. I'll be dealing with how not a single person, but everybody was responsible. There was a famous book of Toba Tek Singh. You might have heard about it. इसमें चुगताई लिखी हुई है वो, तोबा टेक सिंह, पंजाबी. And Khushwant Singh Saab has written so many things about train to Pakistan and stuff. If you read those books, partition has been and was a very controversial, very something which shouldn't be discussed. बहुत मसला हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत इश्यूज हुए. अगर कल के दिन आपको बोल दे कि रूम खाली कर दो तो हम लोग के दिमाग खराब रहता है. आपको तो घर छोड़ने को बोल रहे हैं. Thousands of people were killed, like lakhs of people were killed. A lot of women was raped. So I mean, it has been a very cathartic this thing. Okay, coming back to the social religious reform movement. So it somewhere started to, and these Britishers came wholeheartedly to extract revenue, and on the garb of that we will civilize. 1770s से 1810 1820s तक 50 साल का उनका राज हुआ था, लेकिन उसमें भी lot of people were educated, and it was somewhere or the other the impact of that. The reform movement was also the impact of reform movement of Europe. You understand? So the first line, socio-religious reform movement aimed to modernize Indian society, okay, through social restructuring. इसको मत लिखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. It was the 1860s, 1850s. That was no. White man burden goes throughout
the Britishers' Raj. It's just that it's a thing which we use for the British Raj. It has nothing to do with this. This is from inside. देखो यार, religious reforms हो रहे हैं, वो भी कौन कर रहा है? लड़कियों के reforms हिंदुस्तान में आदमी कर रहा है. In 19th century, whichever reforms is taking place are been taken care by whom? Either by Ishwar Chandra Vidyasagar, Raja Ram Mohan Roy, Keshav Chandra Sen, Rana Dey. So these names are very important. As far as questions are concerned, last year there was a question on Ishwar Chandra Vidyasagar, on Brahmo Samaj, and all. ठीक है, तो इसको पहले इसका ये लिख लो. The second line, you write please. The Socio-Religious Reform Movement and their leaders were characterized by the interconnection between religious and social issues. I have talked about them. This line is very important. This line you just read because you have this material and you have spectrum also. You can skip this, but this is introduction line. Please write this. You can say that, but the point is, this type of question titles is not asked, but you can write that also. Yeah, he said. Because I'm more concerned about Atmiya Sabha and what he, this like Brahmo Samaj and all that. But that comes in a little while. I'll make you write from Daya. This book is also important because this is a thick book, so I don't think you need it pura. No, don't write this. Don't only write this much. Okay, so what is important here is, whatever questions are UPSC asking from, they're asking about names, types of reforms. Names of whom? The reformists and the organization they established. They're talking about the reforms like Ishwar Chandra Vidyasagar was the what do you call it, principal of the Sanskrit college was or not. So these types of things are important, kind of factual details. What was the need of these reforms and what led to these reforms? The Western education. That's what they say. Because Bengalis starting वहीं से हुई थी. तभी आप देखो Bengali women starting from वो लड़की का नाम लेडी का नाम क्या है जो अभी बहुत चलाती है पार्लियामेंट में? Not Mamta. Mom Mitra, very fond of her. Very. मतलब हमने देखा Bengali ladies वैसी बहुत overtly बात करती है. मतलब they are very. So education, you know, along with they're like British people. ऐसे कहते हैं कि अंग्रेज लड़कियां भी बहुत मतलब वो होती है, मतलब open होती हैं and stuff. तो तू अंग्रेज चला जाएगी, लेकिन क्या पता वहाँ कोई लड़की मिल जाए. Yeah. Okay. This line is very important. And this time period onwards, we see 1 lakh rupees being given. So freedom of press was happening, intellectual revolution was taking place. Britishers, along with development, they had to make certain section of people educated so that they can have, समझ रहे हो ना, कुछ लोगों को तो अंग्रेजी सिखानी पड़ती है, and who else is better than Bengalis? So we see a lot of educated people, along with that education came, you know, rationality. Rationality एक छोटा सा term है यार. आपने देखा होगा कई लोग पंजाब के कनाडा में हैं, तो पंजाब में कास्ट सिस्टम सबसे कम है. कास्ट सिस्टम है ही नहीं पंजाब में. Yes. So I mean, and look at Uttar Pradesh, who is not developed, has a lot of caste issues. Telangana, I don't think there's much. Andhra, yes. So when you are educated, in Bengal also, so that was the positive things you can take from Britishers. Okay. So one first very important point. इसको लिखो सिर्फ Western education factors which led to, and you can question that also, and the factors of freedom of press which were making more favorable conditions for growth of new thoughts. Thoughtful Indians, where you can write about Raja Ram Mohan Roy and Henry Derozio. And the fourth term is questioning the West. That no. If you are saying that Indians are not educated, then you are wrong.
We have been educated, civilized long back. ठीक है, इसके बाद ना इनको छोड़ देना, क्लासिफिकेशन ऑफ रिफॉर्म्स, जस्ट राइट नाउ द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, (1772 1833). राजा राम मोहन रॉय, 1772 to 1833. He started Atmiya Sabha, ATMIYA, Sabha, Society of Friends, as it was called, and carried on a consistent struggle against the religious and social malpractices prevalent among Hindus in Bengal. He opposed among Hindus in Bengal. He opposed the practice of idolatry. Idol worship means caste rigidities, and prevalence of meaningless rituals. Meaningless rituals. मीनिंगलेस रिचुअल्स इससे पहले भी किसी ने क्वेश्चन किए थे? ठीक है ना? So this is not the first revolution we are facing. Before that also, Buddhism, Jainism also questioned the meaningless rituals. ये बात याद रखना. You want to write? You can write also. Similar to Buddhism, ऐसे लिख दो. Similar to Buddhism. That will click an idea in your head. Yes. In 1828, he, along with Dwarkanath Tagore, established the Brahmo Samaj, which was later known as Brahmo Samaj. A community dedicated to anti-idolatry. A community dedicated to anti-idolatry, abolition of meaningless rituals and customs. Monotheism, MONOTHEISM. That is the worship of one God. And worship of Brahman. In 1829, Lord Bentinck, BENTINCK, the then Governor General of India, enacted a law against practice of sati
This was done by the efforts of Raja Ram Mohan Roy only. Okay. He was a staunch supporter of freedom of press. He bought a newspaper in Persian called Mirat-ul-Akhbar, M-I-R-A-T, Persian, called Mirat-ul-Akhbar, M-I-R-A-T-U-L-A-K-B-A-R, Akhbar. Mirat, M-I-R-A-T-U-L, Mirat-ul-Akhbar, A-K-B-A-R, और अकबर भी लिख सकते हो. That is the mirror of news. That is the mirror of news, and a Bengali weekly called weekly newspaper called Samvad Kaumudi, or S-A-M-B-A-D, Samvad Kaumudi, K-A-U-M-U-D-I. That is moon of intelligence. In 1830, he traveled to England as the Mughal emperor. Akbar II envoy for both, taking up the petition for increase in his pension, and also ensuring that Lord Bentinck's law banning sati was not overturned. भाई जब इन्होंने ये पिटिशन फाइल की थी तो he was scared that might be और लोग भी तो थे ना, काउंटर करते हैं ना, so he made sure that sati doesn't come back. Okay, so this is very important. Another very important social reformer is Devendranath Tagore of 1817-1905. टाइम पीरियड है उनका. Devendranath Tagore. He was the father of Rabindranath Tagore. 1817 to 1905. He was the father of Rabindranath Tagore. In 1839, he founded Tattva Bodhini Sabha, truth-seeking society. To carry on seeking society, to carry on Raja Ram Mohan's ideas of Brahmo Samaj. You see, all these people had the same mentality which the Buddhists have. क्या था कि ये रिचुअल कुछ नहीं है, you just follow God. किसी पत्थर को पूजने की जरूरत नहीं है. That's what Raja Ram Mohan Roy said. That's what तत्वबोधिनी सभा said. That truth, सत्य की खोज करो. ये सब आडम्बरों में पढ़ने की जरूरत नहीं, पत्थर की पूजा मत करो. Understand what I'm saying? No. These are followers of Vedanta. That's what I'm trying to tell you. Please write. They followed Vedanta and Upanishads. And distance themselves from earlier outdated version.
based on meaningless rituals. Okay. Keshav Chandra Sen, 1838, 1884. Sen, 1838 to 1884. He tried to simplify the Brahmo Samaj philosophy. Keshav Chandra Sen tried to simplify the Brahmo Samaj's philosophy. He opened Samaj's branches in UP, Punjab, Bombay, Madras, and other states. However, there was a difference emerged between Keshav Chandra Sen and Devendranath Tagore. ये बहुत जरूरी है. केशव चंद्र सेन का और टैगोर का इश्यू था. He was more liberal and Devendranath Tagore was very conservative. You understand? Emerged between Sen and Tagore, as Keshav emphasized on universalism and social radicalization. Social radicalism, you can also say. Social radicalism. Okay, so we see one section of society. See, क्या होता है देखो, that happened to Gandhi also, and that happened to Subhash also. That happened to moderates also. That happened to extremists also. भाई एक सेक्शन चाहता था कि नहीं आज ही कर दो सब कुछ. ये कहते थे रुको यार थोड़ा आराम से करते हैं, पहले कुछ कर लो. गांधी कहते थे कि नहीं यार इजीली करो. सुभाष कहते थे कि यार कैसे कर लो इजी, यार चिल मारो, इतने लोग मर रहे हैं कैसे चिल मारो. बट वही बात है, हमारे फादर कहते हैं कि पेशेंस रखो, हम कहते हैं नहीं पापा आज ही करना है. डिफरेंस. बोथ ऑफ देम डोंट वांट थिंग्स टू हैपन. कोई जल्दी चाहते हैं, कोई देर में चाहते हैं. अंडरस्टैंड? सेम. सो देयर वाज अ स्प्लिट इन दिस थिंग. सो Tagore, who was more conservative, called himself Adi Brahma Samaji. I repeat, Tagore, who was more conservative, called himself Adi Brahma Samaji or original Brahma Samaji. And Keshav Chandra Sen established Brahmo Samaj of India in the year 1866. 1866. ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. Then we have Swami Vivekanand. Adi Brahma Samaj is Tagore's, and Brahmo Samaj of India has branches all over India in 1866. Very good. On the same time period, we had Ramakrishna Mission. कौन थे रामकृष्ण? Vivekanand. ठीक है. So the point I'm trying to make is now these people have started questioning the modern. अब सारे तो इंग्लिश एडुकेटेड थे, विवेकानंद भी इंग्लिश एडुकेटेड थे, केशव चंद्र सेन भी इंग्लिश एडुकेटेड थे, देवेंद्रनाथ टैगोर भी इंग्लिश एडुकेटेड थे, बट द वे दे वर इंटरप्रेटिंग द हिंदू टेक्स्ट वाज वेरी डिफरेंट. दिस हैज नेवर हैपेंड इन इंडियन सोसाइटी बिफोर. अभी भी ये डिबेट्स नहीं होते इंडिया में कि भाई क्यों, व्हाई, व्हाट इज द पॉइंट, बट दे क्वेश्चन एवरीथिंग. एंड यू नो दे आर वेरी रिलीजियस. बंगाली से रिलीजियस तो मेरे हिसाब से कोई है भी नहीं. लुक एट देयर दुर्गा पूजास, लुक एट एवरीथिंग. बट रिलीजन इज सेपरेट, स्टेट इज सेपरेट. दे शुडंट बी intermixed. Okay, so Ramakrishna Mission, the time period, please write this time period only. Just write Ramakrishna Paramahansa's time period, 1834 to 86. And just come back to Swami Vivekananda, who was the one who popularized his movement. One point, please don't write the whole. Second point, please write this. अब हम वेदांता की खेल रहे हैं, तो वेदांता है क्या?
ठीक है, बट व्हाट इज द अंत ऑफ वेदास? अंत क्या होता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसका अंत करना है? चलो पहले लिख लो, फिर बात करते हैं। Clear? So what was I talking about? Rationality, Vedanta. See, the concept of him was very simple. That the concept of 1770s French Revolution was happening simultaneously. So these educated people were saying कि भाई liberty, equality, and fraternity are very important. And liberty, equality, fraternity are the concepts coming up from French Revolution. That's rationality he was talking about. कि भाई सिर्फ religion खेलने से नहीं होगा. You have to be in tune with the rest of the world. You cannot be just religious and live your life. Basically, the idea of that was the end of those religious practices and moving beyond this thing. No. Let me just write. This is a term called rationality. कि भाई मैं घर में पूजा करता हूँ, मेरा तिलक लगा के ऑफिस जाता हूँ, लेकिन ऑफिस में टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ, मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ. You understand what I'm trying to say? That's rationality. I'm having a turban. That doesn't mean I'm a नहीं सिख तो हो गए थे टर्बन पहनेगा. हाँ, it's the religious. कई बार लोगों को बोलते हैं ना कि टर्बन पहना हुआ है तो तुम्हारा religious. No. It's just that it's my personal thing. आपने कहीं डॉक्टर को देखा हो टर्बन पहने हैं या आप इकोनॉमिस्ट को देखो टर्बन पहने हैं. समझ लो, दिस इज अ थिंग कॉल्ड यार ये रैशनैलिटी टर्म ना, सिर्फ टर्म नहीं. Yes, it's the part of their identity. I'm a Hindu later, but I'm a human before. You understand what I'm trying to say? When I'm a human, then I'm a Hindu. From Hindu, I am Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudras, which was written in whom? Vedas. So this comes later, this comes first. You understand? That's called rationality. Where to follow, where not to follow. The religion. That's what they're saying कि भाई तुम्हारे गरीब देश में आधे लोग तो नंगे घूम रहे हैं, आधे लोग भूखे हैं, और तुम religion खेल रहे हो. That's the point he's trying to make. Only religion will not feed us. We have to make efforts. ठीक है? समझ में आया? सिर्फ लड़कियों को मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, जाके बात करनी पड़ेगी. क्यों लल्ला? अब पता नहीं वो तो मैं क्या कह सकता हूँ. जो जैसे काटने वाली भी तो वैसे भी काट देगी, है ना? देयर आर एवरी टाइप, भांति भांति के लोग, हर तरीके के लोग. काटने वाली भी है, क्या पता तुम उसका काट दो. आई एम नॉट सेइंग बिकॉज़ दे आर लेडीज, बट मैंने दो तरह के लोग देखे, लड़के भी लड़कियां भी, जो खुद को फन्ने का समझते हैं. समझ लो, guys also as well as girls also. अब तो क्या कहूँ यार, मैं मेरे एक्सपीरियंस तो खराब नहीं रहे, बट आपका देख के लग रहा है मुझे बहुत खराब रहे. But it's okay यार, you know, like I have a lot of friends who are guys who are literally dukhi from girls, and the girls are also dukhiyaris. So अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की लड़की के साथ हो. अच्छी लड़कियां होती हैं. हाँ वैसे ये भी ठीक कह रहे हैं. So now we have talked about Bengal, a bit of about Swami Vivekanand. थोड़ा पहले लिख लो. मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें रैशनैलिटी की बात है ना. अगर मैं ये कहूँ कि एवरी गर्ल इज दिस और एवरी गाय इज दिस, तो दोनों गलत होगा मेरे हिसाब से. मैंने कई लड़कियों को देखा कि एक लड़के से ब्रेकअप हो गया तो उनके लिए सारी लड़के ही हो जाते हैं. यू गाइज आर लाइक दिस एंड दैट. अभी मेट्रो में चलते रहते ना लोग, मैं तो ट्रैवल भी अकेले करता था अभी तक.
तो अब लड़के लड़कियों, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ से टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो गर्ल्स एंड गाइज ऑलवेज कम फ्रॉम नैनीताल, तो मैं उसी ट्रेन में आता हूँ घर से वापस। तो मैं बैठा रहता हूँ, अकेले खाते हैं, पर खाना पड़ेगा आदमी को। तो कोई लड़की यहाँ से चिल्ला रही है, कोई इधर से चिल्ला रही है, कोई इधर से चिल्ला रहा है। कई लड़के भी हीरो होते हैं, वो भी पता नहीं क्या चिल्लाते हैं। मतलब व्हाई आर सो पीपल सो हैप्पी सीइंग हिल्स, हमने तो ये किया वो किया। फिर पूछते हैं भाई आप कहाँ के हो, मतलब वहीं जहाँ से आप आए हो वहीं रहता हूँ। लाइक अच्छा गुड। मैंने कहा इट्स नॉट टू शो ऑफ दैट यू आर कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड एंड स्टफ, यू डोंट नो द रियल प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। नाउ थिंग्स हैव बिकम शो ऑफ ना, कि मे बी हमारे टाइम पे लोगों के पास फोन नहीं था तो हो सकता है, बट मैंने अपनी शादी की भी फोटो नहीं डाल रही है सोशल मीडिया पे। मतलब मेरे को इट्स माय पर्सनल थिंग, आई कैन नॉट शो एवरीबॉडी कि हाँ देखो देखो मेरी ट्रॉफी थोड़ी है घर वाली। मतलब इट्स जस्ट माय थिंकिंग, इट मे बी रॉन्ग। अभी मैंने अपनी वाइफ को बोला कि तू डाल दे भाई, मैं तो नहीं डाला, मेरे बिहाफ से क्यों। हाँ तो भी मैंने हटा दिया हूँ। सब लोग मेरे को ऐसे भेड़ बकरी की तरह देख गया। यू नो इन माय लाइफ आई हैव सीन लॉट ऑफ डाउन्स इन यूपीएससी, सो आई एम स्टिल थिंकिंग कि अच्छा टाइम आता तो आप वो करते हो ना। यूपीएससी इज लाइक ओशन, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कहीं नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत होता है यूपीएससी में। फिर आप थोड़ा सा हम्बल हो जाते हो कि अच्छा हाँ अच्छा भी हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा हो रहा है तो हो ही रहा है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो आई ऑफन टेल पीपल कि ऐसे रिजल्ट के लिए वेट मत करो, तुम तैयारी करते रहो, इस साल नहीं होगा तो अगले साल कोशिश करो, तुम्हें लग रहा है नहीं हो रहा है तो कुछ और करो। सेम विद गर्ल्स ऑल्सो, गर्ल्स के पीछे मत भागो, अपना काम करो, ऑफर मारो छोड़ दो, मानेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई और सही, बस ठीक है क्यों भाई। बाकी विल टॉक लेटर अबाउट दिस, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट विवेकानंद साहब। सो ये मैंने बोला ना, he urged people to imbibe spirit of liberty, equality and free thinking. अगर स्टेटमेंट ऐसा आता है that he was focusing people to get more religious, so he wanted to be people to be more liberal, more rational, along with spiritual. So spiritualism and rationalism go hand in hand. तुम समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? That the philosophy of Swami Vivekananda was overtly तो लिखेंगे नहीं, was spiritual only. Only में तो आजकल लोग ये खेल जाते हैं ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि only वाला सही होता है. He emphasized spiritualism on spiritualism. He only emphasized on spiritualism is something very rationally सोचो ना तुम कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, ठीक है. These factors are important. Just write the first this much. Humanist तो था ही वो, but he had this thing कि लोग भूखे मर रहे हैं और मैं मंत्र जप रहा हूँ, doesn't make any sense. This one and this one. Because in 1897 यूपीएससी में क्वेश्चन आया था क्रोनोलॉजी वाला, establishment of ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कब हुआ था? ब्रह्म समाज स्टैब्लिश कब हुआ था? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866 एंड रामकृष्ण मिशन 1897. तो इसको ये बोल सकता है कि टाइम में वो करो, ठीक है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इस तरह के क्वेश्चन वो बनाते हैं. एसी में पूछा था ऐसा सवाल. स्विच ऑफ कर दो. कौन सा वाला है यार? हो गया बट दोनों का रिमोट एक ही है, तो फिर इसको है बताओ. एंड अरे पूजा इज देयर. हाय पूजा. बट व्हाट इज शी सेइंग? एंड क्या बोल रही है? ओके ओके. So this is a part of it. Then we had a social reform movement in Maharashtra, in Bombay region. This is 1840s. This name is very important. Gopal Hari Deshmukh, known as Lokhitvadi. Okay, they aim to fight idolatry. वही जो उधर से आया वो इधर हो गया. मतलब they had जो ब्रह्म समाज movement of India था, it impacted these people. Gopal Hari Deshmukh, who was also known as Lokhitvadi.
Just write first line and then write this fact. Then we'll talk about Brahmo Samaj. Sorry, Pratna Samaj by Pandurang. Yes, in Maharashtra they have started different, and this is asked by UPSC. What is this? Pratna Samaj. Dadoba Pandurang किसके आत्माराम पांडुरंग के बड़े भाई थे. This Dadoba, name is Dadoba Pandurang, is the elder brother of Atmaram Pandurang, who was the founder of Pratna Samaj, and they have the same motto. Idolatry को वो करो, child marriage को वो करो. इसमें लिखा हुआ है founded. Okay. These are facts, very important facts. So I'll give you some more facts before you understand the story, right? See, reforms are not reforms for the sake of it. Women के reforms कौन-कौन से थे? सती, widow remarriage के reforms कौन-कौन से हैं? Child marriage के reforms कौन-कौन से? वो वाले लिखेंगे अभी, ठीक है? और किस-किसने किया? कहाँ-कहाँ पर थे? उसकी organization कौन-कौन सी थी? वो spectrum में दिया हुआ है, just to just make you to revise. Those things are important, ठीक है? Yes, प्रार्थना समाज ये लोग आत्माराम पांडुरंग ने वो किया था. But these people are also members of Pratna Samaj actually. See, क्या आप पूछना क्या मैं समझा नहीं, Pratna Samaj was made by these people. हाँ, आत्माराम पांडुरंग. लेकिन लोकहितवादी किसे कहते हैं? हाँ, he was also associated with, because like see, एक ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कौन है वो ठीक अलग है, एसोसिएशन किसके साथ है वो अलग है. आप समझ रहे हो ना? Atmaram Pandurang was the founder of this Pratna Samaj, and these people were associated with the movements. समझ रहे हो? और लोग भी हैं. विष्णु शास्त्री पंडित. अच्छा मैं लिखूं? And look at these people. These people when joined, these people, M.G. Ranade. Yes, they joined the same movement. M.G. Bhandarkar. These are very important people. अब जैसे हिंदुस्तान के मूवमेंट को जब गांधी ने ज्वाइन किया, the same movement became more popular. I'll just give you names now. Now we have Vishnu Shastri Pandit. लिखो 1827, 1876. दूंगा मैं 5 मिनट का ब्रेक दूंगा अभी. You want now or you want? अच्छा 20 मिनट झेल लोगे ना? ठीक. विष्णु शास्त्री पंडित 1827, 1876. He worked on female emancipation and widow remarriage. He started Punarvivaha. Acha. Widow remarriage, female emancipation and widow remarriage. He started Punarvivaha Tojak. Punarvivaha TOJAK Mandal. Okay, Ant.
Society for Encouragement of Widow Marriage in 1865. Society for Encouragement of Widow Remarriage in 1865. Okay, then we have Jyotiba Phule, very important. इसको स्टार मार्क कर दो. In 1873, his time period is 1827 to 1890. 1827 to 1890. In 1873, he founded सत्य शोधक समाज. सत्य की खोज मतलब सत्य शोधक, SATYA समाज. It is Truth Seekers Society to liberate Shudras from exploitation. Means he himself was a Mali, so it was a religious social reform movement. Through the mouthpiece of Satya Shodhak Samaj, through the mouthpiece of Satya Shodhak Samaj, Deen Bandhu and other prominent works like Sarvajanik Satya Dharma and Gulam Gin, GULAMGIN. He tried to give a sense of identity to the depressed classes. His wife, Savitribai Phule, was a pioneer. His wife, Savitribai Phule, was a pioneer of women education in India. Guys, now we have another movement called the Arya Samaj. See, Brahmo Samaj and Arya Samaj are two different ideologies. These people say go back to Vedas. Spectrum में लिखा हुआ है go back to Vedas, not the Vedic times. इसका क्या मतलब है? Follow the Vedic culture, but follow the Vedic core principle, but not the division of society. वेदों में कई चीजों को लिखते हैं, ये मानते नहीं है. जैसे they promote intercaste marriage. They promote interdynamic. ये एक बेसिक समझ लो. इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था डीएवी कॉलेज. डीएवी कॉलेजेस देखे हम लोगों ने. अब इसके बेसिक्स में चलते हैं. डीएवी कॉलेजेस होते हैं ना, डीएवी स्कूल्स, डीएवी कॉलेज नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है, नॉट इन साउथ इंडिया. सी, when a religion is questioned from east, west, north, south. There are some people who follow it. There are some people who do not follow it. There are some people who wear turbans. There are some people who don't. There are some girls who put tilak, bindis, chunis, whatever. There are some people who go on shorts. There are some people who make videos in metro. There are some people who don't. Day before yesterday, I was like seeing ऐसे करके मेरे को तो मैं तो किनारे हो गया. मेरे को बहन बस सारा नाच आदि कर देगी क्या? कुछ बात के लिए बचा के रख. But I feel really strange. How can you dance in front of so many people and make a video? But it's okay. वही बात है. But it's something publicly ना, थोड़ा भीड़ है तो आप भीड़ में तो मत नाचो ना. तो वो है. तो थोड़ा साइड में नाचो, आराम से वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है. But the other day I was in metro, तो there was a guy and there was a lady. तो वो एक दूसरे को खींच रहे हैं गेट के सामने. मैंने कहा यहाँ लग जाएगी तुम्हें चोट. तो किसने उसको बोला वो लेडी को कुछ, तो वो चढ़ गया उसके ऊपर राशन पानी लेके. But then I was like, what to say? You cannot say that, na? Anything. So
नहीं ठीक है, what can we say? And they were like literally pulling each other from एक उसको खींचने के चक्कर में थी उसके. So you understand what I'm trying to say? कि religion and rationality is very different. So these people said that we are going back to Vedic texts which talk about religion and ins and outs of religion, but we are not following them in letter and spirit. We are promoting intercaste marriages. So ये लोग क्या करते हुए ऋग्वेदिक पे जाते होंगे. ऋग्वेदिक में क्या था? There was no caste system. There was interdining. There were women rights. Yes. Participating in. There was interdining. So it's like that. Okay, you understand? Now the factual part of it. It was founded in 1875 with a So Vivekananda went to the Vedas, which he considered to be infallible. This much is important. This is one part. This is second part. Only this much. Then they started off their education institutes, in which Lala Hansraj played a very important role. This Hansraj College, my college, is established by DAV people only, which were inspired from Dayanand. Dayanand Anglo-Vedic. Dayanand, D-A-V. देखो what was the concept क्या बोला, to stop conversion of Hindus into Christianity. That's the whole concept they were having. इसलिए क्या played a leading Hansraj College is established by them. लिख लो ऐसे. That's why we have a Gaushala in Hansraj College nowadays. हमारे टाइम पे तो नहीं थी, but अभी हो गई. I'm from Hansraj College, so they have a Gaushala. So they have all the gobers in this thing. तो it's okay, ठीक है. हमारे घर में भी गाय है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गाय है, गोबर से कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे. हैं? स्मेल भी नहीं आता उसमें से. It's not like human waste. हाँ, जिसने नहीं किया उसको लगता होगा. It's all घास, उसमें घास खाती है ना गाय, तो उसमें हमारे घर में तो उपले बनाते हैं उसके. So yeah, okay. And there are two types of people in this movement also. One is who are not conservative, who are open like Dayanand Saraswati, and one is Swami Sahajanand. इन्होंने क्या किया था? गुरुकुल कांगड़ी जो हरिद्वार में है ना, जो भी रामदेव दाढ़ी वाला. So it's made by them only. So in 1902, Swami Sahajanand or Shraddhanand made Gurukul near Haridwar. This is 3. Is it the same there? हाँ, same. Patanjali is there. वो traditionally उनका ही है. बहुत माल कमा लिया पतंजलि वाले बाबा लोगों ने. हम न पेंगे. Maybe they might be authentic. मैं तो खुद ही उसका पेस्ट यूज करता हूँ. So अच्छा नहीं है ना? बाबा इतने पैसे का करेगा क्या? What will he do out of this money? Girls? कि drugs? आश्रम बाबा. Who knows? His facing like that is also very expensive for the thing. I have no clue. I've gone to his site. It's 30,000. बाबा खुद पैसे कमा रहा है.
Okay, so we here are concerned with the reform movements of Bengalis in Maharashtra, but apart from that, the Muslim community was also facing a lot of this thing. Ye to I'll take care when I'll be taking care of the home rule movement. Okay, of this thing. This is very interesting, guys. एक बार इसको देख लो. The most important reformer here is Syed Ahmed Khan, जिन्होंने अलीगढ़ स्कूल की establishment की थी. तो these people were little क्योंकि आपको पता होगा जैसे नसरुद्दीन शाह है ना, वो भी अलीगढ़ से ही पढ़े हैं. He's from Sherwood. नसरुद्दीन शाह को जानते हो ना? नसीर शाह नहीं तुम लोगों को पता? अरे ये वेडनेसडे नहीं है मूवी, उसमें जो एक्टर है हाँ बूढ़े से ही है, which is very old, it's like 70s. अच्छा तुम लोगों ने किसकी बात करो यार, मैं तुम लोगों ने देखा होगा उसको. He's very मतलब one of the senior most actors. Anyway, so this movement basically, there was a kind of reform movement going on after the education system was introduced in India. This was simultaneously happening, and we are talking about 1870s, I guess. No, yes, 1817. Sorry. So the time period of Syed Ahmed Khan, as you can see, is 1870 to 98. He was born. Very rich people, rich Muslim community, and ये लोग क्या सोचते हैं? 1857 में क्या हुआ था? 1857 revolt was said to be a revolt of Muslims because the leader was Muslim. So after that, what used to happen is they used to think that now we have to be in the good books of English. So in this rat race, when they wanted more concessions from the East India Company or the British, so they wanted to get closer to Britishers. So this Syed Ahmed Khan or the Aligarh school had this ideology that we have to be equally educated like Hindus. And we have to get maximum out of Britishers, the concessions. Because seats were lesser, civil services में हिंदुस्तानी कम थे, तो उसमें से भी जो मुस्लिम कम्युनिटी में पैसे वाले थे, उनको they wanted to encourage, and they were anti पर्दा, बहुत बड़ी बात है, but they were anti International Congress. They did not like International Congress to be established. समझ लो? Okay. अब इसमें से क्या-क्या लिखना है? Just write the time period. Okay. He wanted to promote the modern education. This is very important. He wanted to be, he established in 1875, he established a legal school, which is called Anglo-Oriental College in 1875. The time period is very important, guys. The today's Aligarh Muslim University was established in 1875 by whom? Syed Ahmed Khan. Yes. Every language has to be spoken in the way it should be, na? So it's not Khan, it's Khan. कुछ और मत कर देना आप मुंह से बस. तो Urdu is a very good language. I really like Urdu. Done? Okay. You got the basic premise of what I'm trying to say, na? अब यार थोड़ा सा ना पारसीस का भी देख लेते हैं. उमर इकबाल is not that important. This is Parsi. Parsis कौन थे? बताना जरा मुझे. Was Parsis? Like the people who came from Persia were called Parsis. ठीक है? So very important figure is Naroji Fardonji, and who are Parsis nowadays? Sorry? Tatas are Parsis, yes. Or a lot of big doctors in India are Parsis. Lot of big businessmen like tire wala, screw wala, ऐसे लोग होते हैं. चाय वाला. Yes, very important point here is this Rehnumai Zayan Sabha, which was basically a reform movement among these people are very closer to Christianity since they were living, they came from there, and it's 0.1% of the Indian population, but very rich people.
ये सब बॉम्बे में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, these are very rich people. So in 1851, this point is very important. This one. Good back. So in 1851, this part is to be noted. Renumai Mazdasan Sabha or Religious Reform Association was started by Naroji Fardonji and Dadabhai Naroji, who was the grand old man of India, because he was a member of British House of Commons. बड़े 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 लोग हैं, मतलब very rich people. SS Bengali. Then we have our Akali movement. What is Akali? She'll tell me. Akali कौन होता है भाई? बताओ जरा. सिख तो मुझे ही पता है. अकाल तख्त. हाँ, kind of. See, महंत they call him. तो करप्शन ब्राह्मणी नहीं करते हैं, महंत नहीं करते हैं, क्रिश्चियन पादरी नहीं करते हैं, फादर्स इन द होली स्पिरिट करके वो पैसे लेते हैं सबसे, इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट. सो करप्शन इज एवरीवेयर, इट्स नॉट जस्ट रामदेव एंड स्टफ. सो रिफॉर्म इज नीडेड एवरीवेयर, यू अंडरस्टैंड. सो द मेन एम वाज टू प्यूरिफाई द मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वारास. दैट्स द होल पॉइंट. दिस पॉइंट, द मेन एम इज टू प्यूरिफाई द गुरुद्वारास फ्रॉम द मिसमैनेजमेंट और द करप्शन ऑफ this महंत्स. This first line is very important. The Sikh masses led by Akali, started this powerful movement. You see, these Akalis then came to power gradually and misused the power. इतना भी याद कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है. So there are women who are associated with this that will do along with the freedom movement. Salla Devi Chaudhary, सरोजनी नायडू, ये लोग क्या थे? सोशल रिफॉर्मर्स भी थे और क्या थे? फ्रीडम फाइटर भी थे. ठीक है? सो दिस विल डू साइमल्टेनियसली. ये हो गया गाइस. विल बी स्टार्टिंग ऑफ टुडे ओनली विथ द व्हाट डू यू कॉल इट, ट्राइबल मूवमेंट्स. क्विकली टेक अ 5 minutes break. Introducing the Prelims Target course and Prelims Test Series at ProdEgyIAS. Designed for UPSC Prelims 2026, this comprehensive program offers in-depth classes on history, geography, science and tech, environment, polity and governance, and economy. Stay updated with current affairs and sharpen your skills with our Prelims Test Series consisting of 50 full-length tests covering all subjects along with CSAT. Join ProdEgyIAS and stay ahead.